Okay, let's look at this. We have two identical boxes, each of mass 400 kilograms, which are at rest with one on top of the other on horizontal ground. So both of these boxes have this mass 400 kilograms and they're both at rest. A horizontal force of magnitude P Newton is applied to the lower box. You can see on the diagram, this force is applied to the lower box. You're pushing it to the left side. The coefficient of friction between the lower box and the ground, so there's friction between the lower box and ground. This coefficient is 0.75, and the coefficient of friction between the two boxes is 0.4. So there's friction between the two boxes as well. So there's the two boxes are also in contact. So इनके दरम्यान में यहाँ पे इधर भी friction है, ठीक है? Now, in the first part, it says, show that the boxes will remain at rest if P is less than or equal to 6,000. If P is less than or equal to 6,000, okay. So what are the forces that are acting in this case? So if you think about the lower box, how much force is being applied to the ground from here? यहाँ पे ground पे कितनी force लग रही? Anyone? How much force is acting towards ground? 8,000 newtons. 8,000 newton, because we've got weight of both objects, right? So we've got weight of the upper box, that's 4,000. Weight of the lower box is also 4,000. The total जो force ground पे लग रही है, that is 8,000. Now, of course, these boxes are at rest. So the ground is applying an equal and opposite reaction. That's in this direction. R की value भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? It will be 8,000. 8,000 न्यूटन आपका R है. उसने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है. अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मूव करने के लिए आपको कितनी फोर्स चाहिए मिनिमम? You need a force, minimum force that can basically overcome the maximum possible friction, right? तो maximum possible friction F max जो है, अगर उससे ज्यादा ये फोर्स P होगी तो फिर ऑब्जेक्ट मूव करेगा. अगर उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है? So what you can do is you can find the value of F max. Maximum possible friction निकाल लें. Maximum possible friction इस केस में क्या होगी? Mu into R, right? So mu is 0.75 because we're talking about friction between the lower box and ground. इसका coefficient of friction 0.75 है. Mu is 0.75 and the reaction is 8,000. If we evaluate this turns out to be 6,000 Newton. ये आपकी F max की वैल्यू है. Maximum friction is this. तो आप एक फोर्स लगा रहे हो, अगर आपकी वो फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन के इक्वल होगी या उससे कम होगी तो फ्रिक्शन तो उसको मूव नहीं करने देगी ऑब्जेक्ट को. अगर उस मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाते हो, फॉर एग्जांपल अगर P की वैल्यू 6500 होती फॉर इंस्टेंस, तो फिर फ्रिक्शन जो है वो सिर्फ 6,000 होती, आपका ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता. लेकिन अगर 6,000 या उससे कम फोर्स P होगी तो फ्रिक्शन उसके इक्वल होके ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करने देगी. इट विल कीप द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. तो इसका क्या मतलब हुआ? उसने कहा है show that the boxes will remain at rest if P is less than or equal to 6,000. So for the object, for the boxes to remain at rest, P should be less than or equal to F max, and that means P should be less than or equal to 6,000 Newton. ये आपने first part में prove करना था. Let's look at the next part. Now the boxes start to move with acceleration A. So now they're saying the boxes have started moving. अब किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? फोर्स कहाँ पे लग रही है? You're applying a force towards the left side. So of course the boxes start to move towards left like this. ठीक है? आपके boxes यहाँ पे left side मूव करने शुरू करेंगे. मैं force यहाँ पे left पे represent कर रहा हूँ.
P Newton, just like I usually do, कि जिस side पे force लग रही है उसको वहीं पे represent कर लें. It's easier to understand, I think. So we have this force P Newton acting towards the left side. Now, if there's this force P acting towards the left side, where is the friction going to act? Friction is going to oppose this, so friction is going to act towards the right side. यहाँ पे आपकी friction आएगी, ठीक है? So boxes start to move with this acceleration A. तो left पे force लग रही है, friction right पे लगेगी. उसने कहा given that no sliding takes place between the boxes, show that A is less than or equal to R, and then deduce the maximum possible value of P. So सबसे पहले तो हमें ये show करना है कि acceleration is less than or equal to 4. This is what you want to show. Given that no sliding takes place. अब no sliding takes place का क्या मतलब है? Think about it. Now, unfortunately, it's online today, so I can't really give a demo, but let's say we have these two boxes like this. या तो एक box इस तरह से, एक box इस तरह से है, और इसी के ऊपर you've got another box of same size. Like this. You've got these two boxes. Now, if I were to apply a force on the lower box, if I were to apply a force on the lower box such that it's acting in this direction. Let's say मैं बहुत ज़्यादा force लगाता हूँ एकदम से, right? So I sort of apply an instantaneous force of, let's say, so अगर इसका weight जो है हम वही ले लें, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा था, let's say इसका weight is 40 Newton, and I apply a certain force towards left side of I don't know, let's say 200 Newton. Left side मैंने एकदम इतनी ज़्यादा force लगा दी. In fact, let me just increase it even more. Let's say this is 1000 Newton. एकदम मैंने नीचे वाले box के ऊपर left पे force लगा दी. What do you think is going to happen? Any idea? Any guesses? 40 Newton weight है इसका, ये नीचे वाले box का. मैं left side पे force लगा रहा हूँ इतनी ज़्यादा एकदम से. 1000 Newton की force मैंने एकदम लगा दिया नीचे वाले box के ऊपर. What do you think should happen? What is most likely to happen? The lower box will slide towards the left, and the upper box will just like fall niche once the box slides. Yes, that's good. So देखें इसका weight इतना सा है 40 Newton. अब इस पे इतनी ज़्यादा एकदम से force लगा रहे हो, तो क्या होगा? नीचे वाला box थोड़ा सा आगे move कर जाएगा. जो ऊपर वाला box है, उसके ऊपर तो कोई force नहीं लग रही है, right? उसके ऊपर तो कोई force नहीं लग रही है. उसके ऊपर सिर्फ ये है कि इन दोनों के दरम्यान में contact है, उसकी वजह से कुछ friction होएगी. That will try to keep the object keep the upper box connected to the lower box. लेकिन अगर मैं इतनी ज़्यादा एकदम force लगा दूंगा तो क्या होगा? ऊपर वाला box जो है वो जब नीचे वाला box थोड़ा सा आगे move कर जाएगा इस तरह से एकदम से, अगर नीचे वाला box आगे move कर जाएगा तो the lower box sorry, नीचे वाला box जब आगे move कर जाएगा तो upper box जो है that is most likely to just fall down like this. Left lower box आगे चला जाएगा, ऊपर वाला box most likely सोचता थोड़ा सा move करे शुरू में और फिर नीचे slide करके नीचे गिर जाए. So ये ऊपर वाला box basically slide करके यहाँ पे नीचे गिर जाएगा. So all of you understand that, you can try that with two match boxes. नीचे वाले match box का करते हैं तो ऊपर वाला slide होके नीचे गिर जाता है ना? ये होता है. अगर मैं 1000 न्यूटन के बजाय थोड़ी कम फोर्स लगाता हूँ, लेट्स से 20 न्यूटन, अभी थोड़ी सी फोर्स है. अब जब थोड़ी सी फोर्स है इसका मतलब ये है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इफ इट मूव्स एट ऑल.
डिपेंडिंग ऑन कि फ्रिक्शन कितनी ज्यादा है। तो फ्रिक्शन को अगर लेट्स से एफ मैक्स की वैल्यू यहाँ पे होती, लेट्स से एफ मैक्स की वैल्यू होती आई डोंट नो 15 न्यूटन, तो क्या होता, ये 5 न्यूटन की रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती लेफ्ट साइड के ऊपर, जो बहुत थोड़ी सी फोर्स है। तो आहिस्ता आहिस्ता ऑब्जेक्ट मूव करता है लेफ्ट साइड के ऊपर। जब आहिस्ता आहिस्ता मूव करेगा तो इट्स वेरी लाइकली कि अपर बॉक्स जो है वो स्लाइड नहीं करेगा, वो साथ साथ मूव करता जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, उसने कहा है स्लाइडिंग, there's no sliding that takes place. Okay, तो ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड करके नीचे नहीं करता। Given this condition, you have to show that acceleration is less than or equal to 4. Now, why are they talking about acceleration? Because we just discussed, अगर फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होगी एकदम। जब फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो नीचे वाला बॉक्स आगे मूव कर जाएगा और ऊपर वाला स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर एक्सेलरेशन थोड़ी होगी, so in this case they are saying if it's less than or equal to 4, तो बॉक्सेस जो है वो स्लाइड नहीं करेंगे, नहीं ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड करके नीचे नहीं आएगा, वो दोनों साथ साथ मूव करके लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे। ये आपने प्रूव करना, ठीक है। Now how do we prove this? Let's think about the forces that are acting again. जब लेफ्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो P न्यूटन, तो नीचे वाले बॉक्स पे क्या हो रहा है ये तो हमने ऑलरेडी देख लिया। There's a total force of 8,000 Newton that's acting downwards, and there's reaction that's acting upwards like this. There's upwards reaction that's 8,000. What about the forces acting on the upper box? अगर आप upper box को देखो, upper box पे कौन कौन सी forces लग रही हैं? There's weight of the upper box. How much is that? That's 4,000 Newton. That's acting downwards. एक ये force है. What other forces acting? और क्या है इसके ऊपर? Sir, there's reaction and then reaction. There's reaction. Reaction is acting upwards. What's the value of that reaction? 4,000. That's 4,000, right? Because नीचे weight 4,000 लग रहा है upper box का, तो उसका reaction कितना होगा? That is also 4,000. ठीक है, नीचे वाला बॉक्स ये रिएक्शन लगा रहा है ऊपर 4,000 न्यूटन, ठीक है, टू कीप द अपर बॉक्स इन इट्स पोजीशन। अब जब ऑब्जेक्ट्स मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो नीचे वाले बॉक्स पे क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि ये P की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शन तो अब अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगी ना, फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पे होगी इस पॉइंट के ऊपर, व्हिच इज 6,000 न्यूटन। ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया। तो P जो है यहाँ पे, इट हैज टू बी समथिंग ग्रेटर देन 6,000। that's the reason why the boxes have started moving, क्योंकि 6,000 या उससे कम होते तो फिर तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहते हैं। अब 6,000 से ज्यादा आपकी फोर्स होगी या नीचे वाली, तो ऑब्जेक्ट्स आपके बॉक्सेस जो हैं वो लेफ्ट साइड पे मूव करना शुरू हो गए। ओके, अब नीचे वाले बॉक्स पे फोर्सेस लग रही हैं, ये P लेफ्ट पे लग रहा है और फ्रिक्शन राइट पे लग रही है, तो दैट्स द रीजन द लोअर बॉक्स इज मूविंग। अपर बॉक्स भी उसके साथ साथ मूव करता जाएगा। नाउ व्हाट इज मेकिंग द अपर बॉक्स मूव? ऊपर वाला बॉक्स क्यों मूव कर रहा है? उस पे तो कोई फोर्स नहीं लग रही। व्हाई वुड दैट बॉक्स start moving along with the lower box? Anyone? sir, it's due to the friction between the two boxes. It's due to the friction between the two friction. boxes. So उन दोनों के दरम्यान में क्योंकि फ्रिक्शन है, उस फ्रिक्शन की वजह से आपका जो ऑब्जेक्ट है वो साथ साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाला बॉक्स पे किधर मूव कर रहा है? अगर नीचे वाला बॉक्स लेफ्ट में मूव कर रहा है, ऊपर वाला बॉक्स भी लेफ्ट में मूव कर रहा है, राइट? नाउ कैन आई रेज ऑफ हैंड्स? डोंट स्पीक येट। Can so raise your hand first. Which direction is friction acting in? In which direction is the friction acting? Friction यहाँ पे थोड़ा सा counterintuitive है, in the sense that the box is moving towards the left side. और upper box भी कहाँ पे move कर रहा है? तो शुरू में आपको थोड़ा सा confusion होती है। upper box भी कहाँ पे move कर रहा है? left side के ऊपर। फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी वही है जो आपकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इन दिस केस, मतलब apparently लेफ्ट पे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन भी लेफ्ट मूव कर रही है, लेफ्ट पे लग रही है, because in this case friction is what is keeping the upper box in its position.
बिकॉज जब आप नीचे वाला बॉक्स लेफ्ट पे मूव करवा रहे हो, उस पे लेफ्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो क्या होता है, एज वी जस्ट डिस्कस्ड, द अपर बॉक्स इज लाइकली टू स्लाइड डाउन, क्योंकि उसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, इट वुड वांट टू स्टे इन इट्स पोजीशन। नीचे वाला बॉक्स आगे मूव करने की कोशिश करेगा, ऊपर वाला बॉक्स वहीं पे रहने की कोशिश करेगा कि मूव ना करे, तो उसकी वजह से बेसिकली राइट साइड पे वो स्लाइड करने की कोशिश करेगा। अब उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए ये फ्रिक्शन लगेगी जो उसको अपनी पोजीशन के अंदर रखेगी। तो फ्रिक्शन इज गोइंग टू stop the object, stop the upper box from sliding down. So essentially क्या हो रहा है, upper box किस वजह से मूव कर रहा है, यहाँ पे upper box मूव कर रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से। तो यहाँ पे मूव ही वो फ्रिक्शन की वजह से कर रहा है। लेफ्ट साइड पे जो मूव कर रहा है वो फ्रिक्शन की वजह से कर रहा है इन अ सेंस, ओके, क्योंकि वो फ्रिक्शन ही उसको नीचे वाले बॉक्स के साथ कनेक्टेड रखे हुए है, और क्योंकि नीचे वाला बॉक्स मूव कर रहा है उसके साथ साथ फिर वो ऊपर वाला बॉक्स मूव करता जाएगा। इज दैट ओके? Yes, somebody said something. Ariba? Yes, sir. Sir, if friction opposes motion, exactly which force is it opposing in this case? It's not opposing a force, it's opposing motion. Friction opposes motion, right? नीचे वाला बॉक्स जो है वो लेफ्ट पे मूव कर रहा है, so with respect to the lower box, the upper box is likely to slide towards the right side. Okay, upper box is likely to slide towards the right side. अब क्योंकि वो स्लाइड करने लगा है नीचे वाले बॉक्स के लेफ्ट पे मूव करने की वजह से, ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड करने लगा राइट साइड के ऊपर, तो उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन लग रही है, उस स्लाइडिंग को रोकने के लिए। Yes, sir. And sir, the reason why the box is sliding towards the right is because of its weight, essentially, right? Sliding towards right, not necessarily because of weight, because weight तो नीचे लग रहा है. It's more because of its inertia, because it's in its position, वो rest के ऊपर है, rest पे है तो it will want to stay at rest, but the lower box is moving, lower box left पे move कर रहा है, the upper box is at rest, उसके ऊपर तो left पे कोई force ही नहीं लग रही है, it would stay in its own position. ठीक है सर, नीचे वाला बॉक्स रेस्ट पे था ना, तो उधर ही रहेगा, तो यही नीचे वाला बॉक्स अगर यहाँ पे मूव कर जाता है, अब ऊपर वाला बॉक्स would want to stay in its initial position, तो बेसिकली उस वजह से स्लाइडिंग होगी दोनों के दरम्यान में। फ्रिक्शन इज stopping the upper box from sliding because वो एक मोशन उसकी वजह से होगा, स्लाइड करने की वजह से, with respect to the lower box फ्रिक्शन उसको अपोज कर रही होगी। I hope that makes sense. Yes, sir. Thank you. Okay. Any other questions? Any other questions? यहाँ पे एक जो मेन चीज है वो ये है कि इस अपर बॉक्स को ये फ्रिक्शन मूव करवा रही है, ठीक है, इस अपर बॉक्स को ये फ्रिक्शन मूव करवा रही है। अच्छा, now let's call this friction F2, इसको F1 कह देते हैं पहले वाले को, because these are two different frictions, तो हम दोनों के लिए सेम लेटर नहीं अज्यूम कर सकते। Let me say this is F1 and this is F2. Okay, अब क्या करना है, उसने कहा है no slide, given that no sliding takes place, show that A is less than or equal to 4. Now, as discussed before, अगर नीचे वाले बॉक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लग जाएगी तो फिर तो स्लाइडिंग हो जाएगी, so there's some limit of this friction. इस फ्रिक्शन की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू है, बिकॉज उससे अगर ज्यादा फोर्स लग रही होगी जो ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन फिर उसको अपोज नहीं कर सकेगी, तो ये F2 की भी कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेट्स फाइंड दैट फर्स्ट। F2 की मैक्सिमम वैल्यू फिगर आउट कर लेते हैं। F2 की मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी? F2 max, that is equal to again mu into R, right? mu इसका वाला कौन सा है? Let's call this mu2 as well, इसको भी R2 कह लेते हैं। This is F1 max mu1 R1,
ये R1 था, नीचे वाला दिस इज R2, ठीक है। और हम यहाँ पे कह रहे हैं μ1 जो ग्राउंड और लोअर बॉक्स के साथ है, दैट्स 0.75, μ2 is the mu for both boxes, that's 0.4. Okay, so F2 जो ऊपर वाली फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 into the reaction ऊपर क्या है 4000, 0.4 into 4000 that gives you 1600 Newton. Now this is the maximum friction that can be there between these two boxes. Okay, this is the maximum friction that can be there between these two boxes. ऊपर वाले फ्रिक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई है, 1600 न्यूटन। ओके, अब 1600 न्यूटन इज व्हाट कैन बी देयर टू कीप द अपर बॉक्स इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द लोअर बॉक्स। इसको इन कांटेक्ट रखने के लिए 1600 न्यूटन फोर्स मैक्सिमम लग सकती है। अब देखें ये 1600 आपकी कितनी एक्सेलरेशन को बेसिकली ओवरकम कर सकता है या उसको एक तरह से बियर कर सकता है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन आपकी कितनी आती है, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो ये फ्रिक्शन। सो ये देखें ऊपर वाला बॉक्स लेफ्ट में मूव कर रहा है ना, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है गिवन दिस फ्रिक्शन। अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन आपकी 1600 न्यूटन है तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, लेट्स फिगर दैट आउट। उसके लिए वी कैन यूज एफ मैक्स, RF equals MA रिजल्टेंट फोर्स equals mass into acceleration। अभी जो ऊपर वाली फ्रिक्शन है ये कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है लेफ्ट साइड के ऊपर। रिजल्टेंट फोर्स आपके पास ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर तो सिर्फ यही फोर्स लग रही है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड F2, ये कितनी फोर्स है 1600 न्यूटन। मास कितना है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का, इट्स 400 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू यहाँ पर आती है हमारे पास, दैट इज 4 meters per second square। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम इतनी है तो वो फ्रिक्शन कितनी एक्सेलरेशन बेसिकली प्रोड्यूस कर सकती है अपर बॉक्स के अंदर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, so that it keeps moving with the lower box। maximum acceleration जो लेफ्ट साइड पे कर सकती है that is 4 meters per second square। अब क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ये है, उसने कहा था कि प्रूव करना है आपने कि a is less than or equal to 4। if the maximum value is 4 that means a is supposed to be less than or equal to 4। okay, क्योंकि अगर मैक्सिमम वैल्यू 4 है तो 4 हो सकता है या उससे कुछ कम हो सकता है। so this is the maximum acceleration that's possible for no sliding taking place। अगर इससे थोड़ी सी भी ज्यादा acceleration होगी तो आपका upper box slide कर जाएगा because friction उतनी acceleration नहीं produce कर सकती यहाँ पे left side के ऊपर। Does this make sense? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1600 न्यूटन है, वो 1600 न्यूटन आपके अपर बॉक्स को लेफ्ट साइड पे लेकर जा रही है, लेकिन अब इसकी एक लिमिट है क्योंकि 1600 न्यूटन एक मैक्सिमम आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन क्या हो सकती है उस ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट इज 4 meters per second square। तो अगर 4 से ज्यादा एक्सेलरेशन पे नीचे वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट उसके साथ नहीं रह सकेगा और वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, बिकॉज द मैक्सिमम पॉसिबल acceleration that friction can provide in this case is 4 meters per second square। उससे ज्यादा upper box को वो friction provide नहीं कर सकती है। Okay, now it says and then deduce the maximum possible value of P। P की maximum value figure out करनी है आपको। अब P क्या है, P is the force that's acting on the lower box, right? तो अब P lower box की कितनी मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे जाएगा 4 के ऊपर, मतलब उससे ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो फिर तो ऊपर वाला बॉक्स स्लाइड कर जाएगा। तो नीचे वाले बॉक्स के ऊपर आप RF equals MA अप्लाई कर दें। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम बिटवीन बॉक्सेस देख रहे थे। दिस इज फॉर बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड द अपर बॉक्स, बिटवीन
the two boxes. Now we're considering the lower box and the ground. अब उसके ऊपर आप दोबारा से देख लें फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। लेफ्ट साइड पे आपके पास P लग रहा है, तो अगर आप रिजल्टेंट फोर्स निकालें नीचे और उसको इक्वेट कर दें मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ, रिजल्टेंट फोर्स नीचे क्या लग रही है, P लेफ्ट साइड के ऊपर, और राइट पे कौन सी फोर्स लग रही है, 6000, क्योंकि लेफ्ट पे मूव कर रहा है, फॉरवर्ड फोर्स इज P एंड द बैकवर्ड फोर्स इज 6000, P माइनस 6000 क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन पे होगा जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। मास आप क्या लेंगे, जब नीचे वाले बॉक्स को देख रहे हैं तो टोटल मास आप पूरा सिस्टम एक तरह से कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज वो पूरे का वेट बर्दाश्त करे। दैट इज 800 इनटू द एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास कितनी है यहाँ पे, 4, तो ये A मैक्स हमारे पास 4 था, तो P की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास यहाँ से आ जाएगी, P मैक्स इक्वल्स 3200 plus 6000 and that gives us 9200 न्यूटन। ये आपकी P की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगर P इससे ज्यादा होएगा थोड़ा सा भी, तो एक्सेलरेशन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट्स और फिर बॉक्सेस स्लाइड कर जाएंगे। सो P की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है। This was a 7 mark question. This is the only working that you need for this, so not much working. इसमें ज़्यादा जो है वो thinking involved थी, उसके marks हैं 7 marks. Working तो इसकी बहुत छोटी सी है। Let me know if there is any problem. ये clear है सबको? Two rectangular boxes A and B are of identical size. The boxes are at rest on a rough horizontal floor. So boxes are at rest on a rough horizontal floor with A on top of B. So it's a rough floor. ये उसने बताया, there are two identical boxes. Box A has mass 200 kilograms and box B has mass 250 kilograms. A horizontal force of magnitude P Newton is applied to B. You can see in the diagram, the boxes remain at rest if P is less than or equal to 3150, and they start to move if P is greater than 3150. ठीक है? So P is acting towards the left side like this. तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट लगेगी, राइट साइड के ऊपर। अगर नीचे वाले बॉक्स पे फोर्स लग रही है P, तो इस पे फ्रिक्शन राइट साइड पे लगेगी। Now if the force P is less than or equal to 3150, तो क्या होगा, the boxes remain at rest, और 3150 से ज्यादा होगी तो बॉक्सेस मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। F max की वैल्यू क्या होगी, anyone? Sir, will it be 3150 newtons? 3150, why? Sir, because if the force is even slightly more than that, like it's given in the question, if P is greater than this and the box starts to move, so that's why the maximum value should be 3150, because it remains at rest at this value, and any value Yes. greater than that, it starts to move. Yes, so that's correct. You see, you've got this force P acting towards the left side and this friction acting towards the right side. Now friction has some maximum value. उससे ज्यादा हो जाएगी P की वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा। उसने कहा 3150 से अगर ज्यादा होती तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है, और 3150 के इक्वल होती है, उससे कम होती तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता। That's basically telling you, in other words, that F max is equal to 3150. So this is that cutoff point जिससे अब थोड़ी सी भी ज्यादा फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। So F max is 3150. This is what we have. Now we have to find the coefficient of friction between B and the floor. Now what forces do we have here? एक तो P और F हो गया, vertically क्या होगा? We have weight acting downwards. Weight कितना लग रहा है यहाँ पे नीचे ग्राउंड पे?
What? Answer 4,500. 4,500, right? Because 250 kilograms and 200 kilograms total जो mass है, that's 450 kilograms. 450 kg mass है, तो उससे corresponding weight कितना हो जाएगा? It's 400 and 4,500 Newton towards the ground. ये आपका weight है. Reaction में कितना आएगा? Reaction is going to be equal to that. R equals 4,500. ठीक है, R की वैल्यू आ गई आपके पास. यहाँ पे इनपुट कर दें इसे mu R equals 3150. R is known now, that's 4,500. You'll get the value of mu from this. What's mu? So 0.7. 0.7. This is the value of mu that we have. ये आपको first part में करना था. ठीक है. Now in the second part it says the coefficient of friction between the two boxes is 0.2. तो नीचे ground और lower box में तो 0.7 है. Between boxes 0.2. Given that P is greater than 3150. अब देखें जब P greater than 3150 है, the boxes start to move. So now the boxes are moving. And again, no sliding takes place between the boxes. Show that the acceleration of the boxes is not greater than 2 meters per second square. Again, if you look at the upper box, if you think about the forces acting on the upper box, कौन-कौन सी forces है? There's a downward force, weight upper box का कितना है? It's 200 kilograms. A का mass 200 दिया हुआ है, तो weight is 2000 Newton. Reaction कितना हो जाएगा? Reaction is also going to be 2000 Newton. So this is RA. नीचे वाला जो था, that was RB, let's say. ठीक है, friction जो box B में थी नीचे, that's FB. ऊपर वाले box में भी friction कहाँ पे लग रही होगी? We just discussed that earlier. The force that's moving, that's making the upper object move is friction, basically, because दोनों नीचे वाला object पे ये force लग रही है, ऊपर वाला object उसके साथ contact में रहेगा, तो वो contact में कौन सी force रख रही है उसको friction. तो friction की वजह से आपका object left पे move करेगा, तो friction जो है वो left पे लगेगी ऊपर वाले box के अंदर, क्योंकि वो sliding से रोक रही होगी उसको, right side पे slide करने से रोकेगी उसको. So this is FA जो left side पे लग रही है. अब FA की maximum value figure out कर लें क्या है, उससे आपको मिल जाएगा कि उसके corresponding maximum acceleration कितनी होनी चाहिए. ठीक है, तो friction अगर नीचे वाले object को आप बहुत ज़्यादा acceleration से move करा दोगे तो sliding हो जाएगी. तो maximum possible acceleration क्या हो सकती है वो figure out करनी है. उसके लिए हम पहले find करते हैं कि दोनों boxes के दरमियान में maximum friction कितनी हो सकती है. Let's figure that out first. So between the two boxes, हम देखते हैं फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है. F max फाइंड कर लें, तो इसको हमने FA नाम दिया था. What is this? Mu into R. Mu कितना है इस केस के अंदर? Between boxes वाला mu. So let's call that mu A. ये figure out कर, ये हमारे पास 0.2 है. Reaction कितना आ रहा था ऊपर? Reaction was 2000, so 0.2 into 2000. That gives you the maximum possible friction between the boxes. What does this turn out to be? 400? 400 Newton. ये आपकी friction की maximum value आती है. ठीक है? अच्छा, अब उसने कहा है show that the acceleration of the boxes is not greater than 2 meters per second square. अब आप उसके corresponding acceleration निकाल लें. ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स क्या लग रही है? लेफ्ट साइड पे ये फ्रिक्शन लग रही है. तो हम क्या करते हैं फिर से, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन. रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट साइड पे क्या लग रही है? 400 न्यूटन, और तो कुछ भी नहीं फोर्स लग रही लेफ्ट पे. मास कितना है ऊपर वाले बॉक्स का? इट्स 200 इनटू A max, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज गोइंग टू टर्न आउट टू बी 2. ये आपकी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ये आपके पास आ गई.
एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू इज 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। इससे थोड़ी सी भी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी तो बॉक्सेस स्लाइड कर जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग दिस पार्ट। Part 3, now it says find the maximum possible value of P. Again, it's exactly the same thing. तो आप lower box को देख लें, lower box और ground को देख लें। अब क्योंकि maximum acceleration जो है वो 2 होनी चाहिए, तो इसके corresponding का P की वैल्यू देख लेते हैं। Lower box and ground, इसके ऊपर आप RF equals MA लगा दें। Resultant force equals mass into acceleration। अब resultant force नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे क्या लग रही है? लेफ्ट साइड पे you've got P, राइट साइड पे you've got FB की मैक्सिमम वैल्यू। FB की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3150। Sir, why are P we माइन doing it? Sir, why are we doing a lower box and ground? Like पूरे उस पे क्यों है? हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है ना, P की मैक्सिमम वैल्यू। P फोर्स किसके ऊपर लग रही है? B पे। लोअर बॉक्स पे लग रही है, राइट? B पे लग रही है, तो B के ऊपर हम बेसिकली B के ऊपर RF इक्वल्स MA लगा रहे हैं। तो जो हम फ्रिक्शन लेंगे, फ्रिक्शन कौन सी वैल्यू लेंगे? जो लोअर बॉक्स और ग्राउंड वैल्यू है। Okay, sir. वो ये जो लोअर बॉक्स एंड ग्राउंड लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली फॉर फ्रिक्शन। just write that down there। इसको RF equals MA लगा रहे हैं, तो RF equals MA तो हम बॉक्स B पे लगा रहे हैं, लोअर बॉक्स पे लगा रहे हैं। आप इस तरह देख रहे हैं, that's confusing। बॉक्स B पे हम ये लगा रहे हैं, और ऊपर हम क्या कर रहे थे? ये हम बॉक्स A पे ये लगा रहे थे, RF equals MA। ऊपर फ्रिक्शन जब ऊपर कर रहे थे वो दोनों बॉक्सेस के दरमियान में थी, नीचे जो फ्रिक्शन यूज कर रहे हैं वो नीचे वाले बॉक्स और ग्राउंड के दरमियान वाली फ्रिक्शन है। सो दिस इज द फ्रिक्शन बिटवीन द लोअर बॉक्स एंड ग्राउंड। दैट इक्वल्स मास। अगेन मास कौन सा कंसीडर करेंगे? नीचे तो दोनों का मास दोनों का वेट लग रहा है इकट्ठा, टोटल मास कितना होएगा? 450 इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमने फिगर आउट किया, दैट शुड बी 2। वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। What value do we get from this? 900 plus 3150, that's 4050 Newton. This is the maximum possible value of P. अगर P इससे ज्यादा होएगा तो एक्सेलरेशन जो है वो 2 से ज्यादा हो जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन 2 से ज्यादा हो जाएगी तो ऊपर वाला बॉक्स उतनी एक्सेलरेशन पे जा ही नहीं सकता, तो वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। So this is the maximum possible value of P that we have then, 4050 Newton. Is this all right?